Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करूची जदि भल लागिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाया पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रे आकु बढ़िबा नेक्स्ट देखिबा आज हमें मीडियन सो LR कॉर्नर ये डिफाइन करचंती मीडियन को दैट मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स जो थ्रू गोटे पार्ट विल बी कंप्राइजिंग ऑल द वैल्यूज ग्रेटर एंड द अदर will be having all the values which are less than the median. Okay, so how you calculate this median? Okay, so दुई प्रकार केस आसी पारे गोटे हला केस 1 जो थ्री की तमे अनग्रुप्ड डाटा देखुथबो ओके सपोज फॉर एग्जांपल किजिरा ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें नेला ताले मीडियन सिंपली मिडिल वैल्यूटा हे जिवो ओके लाइक सपोज हमें पांचटा ऑब्जर्वेशन नेला लाइक 35 12 48 60 फास्ट कोन करिबा याकू हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर रे लेखिबा ताले आफ्टर दिस मझी रे रहउची सेंटर पोजीशन रे ए 35 दिस वन ओके सो 35 विल बी द मीडियन नाउ जदि आम पाखरे ऑड संख्यक ऑब्जर्वेशन न थाई कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जदि अछि सपोज फॉर एग्जांपल 8 12 35 40 50 60 ताले एबे मीडियन हमको बाहर करिया को पड़िबो फ्रॉम द टू मिडिल ऑब्जर्वेशंस ओके आ तारो एवरेज बाहर करिबा सो मीडियन विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मिडिल टर्म्स एठी मिडिल टर्म्स केतेरे अछि ना 35 आउ 40 सो यारो एवरेज हमें बाहर करिबा half of 35 plus 40 which is equal to 37.5 ओके आकु बढ़िबा नेक्स्ट होची केस 2 जो थिरे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विषय देखिबा सो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर जो थिरे की वेरिएबल रो वैल्यू जदी x1 to xn अछि with respect to the frequency which is suppose f1 to fn ताले ऑलरेडी हमें मीन कैलकुलेशन रे देखिथिला जे समेशन ओवर f will be capital N which is the total frequency ताले median will be the size of n plus 1 by 2th item or observation right and in this case the use of cumulative frequency माने सब frequency को तमे add करी जिवो okay so cumulative frequency distribution will facilitate the calculation okay यार स्टेप हला फर्स्ट हमें प्रिपेयर करिबा गोटे लेस देन cumulative frequency that is CF distribution then n by 2 बाहर करिबा तापरे CF को देखिबा which should be just greater than n by 2 then the corresponding value of the variable will give you the median okay so याको हमें एग्जांपल रे बुझिबा देखो एठी फर्स्ट एग्जांपल रे होउची जे 8 coins were tossed together and the number of heads x resulting was noted okay so ए ऑपरेशन को हमें रिपीट करिबा अप टू 256 टाइम्स एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें एबे लिखिबा सो एटी ऑब्जर्वेशन अछि x जोथरे कि जेतो हमें 8टा कॉइन टॉस करूछु सेही 8टा भितरु टॉस भितरु हेड संख्या obviously it will lie from 0 to 8 टोटली केबे भी हेड आसीबनी माने 8टा जाको टेल आसीला किंबा थरे हेड आसीला 7टा टेल आसीला एंड सो ऑन लास्ट को हमें पहुंचिला 8टा जाको हेड आसीला किछि भी टेल आसीला नहीं ओके एटा होची सिचुएशन यार ऑब्जर्वेशन रो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दे देला लाइक दिस
ओके एबे मीडियन कैलकुलेट करो कहूची ओके ताले आमे एठी प्रथम कथा समेशन एफ तो आमे एठी जदी सब गुडा को ऐड करिवा you will get 256 then this is the value of capital N ताले capital N by 2 हेगला 128 then थर्ड कॉलम रे हमें लेस देन सीएफ कैलकुलेट करिवा माने रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को देखो हमें ऐड करी करी गला प्रथमटा तो सिंपली 1 अछि तापर 1 प्लस 9 माने ए सेकंड फ्रीक्वेंसी को ऐड कला वी आर गेटिंग 10 एंड सो ऑन ए सब ऐड करी करी जीवो जदी लास्ट को पाइबो 256 ओके ताले हमरो जो n by 2 equal to 128 आसिला ताले एबे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रो कॉलम रे देखिबा जे which one is just greater than 128 this is 167 okay आउ यार जदि corresponding value देखिबा आमे x रो ताले 167 पई एटा आछि केते 4 ओके सो हमरो मीडियन नंबर हला एठी सिंपली 4 ओके एटा हमें गोटे केस रे देखिला तापरे थर्ड केस होची continuous frequency distribution okay so एठी हमें median size जदि देखिबा as before the median is the size or value of n plus 1 by 2th observation so यार again similarly सही steps गुडा अछि एबे आमे कोन करियो median रो formula एबे टिके चेंज हेबो it is equal to l plus h by f n by 2 minus c एठी दुईटा क्वांटिटी आसिला खास करी स्मॉल l कोन इट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास जदी क्लास हिसाब रे देछि ओके तापरे h हेगला एठी तमरो मैग्नीट्यूड बा विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास जोटा क्लास इंटरवल तमे देखुतिलो ताले एठी f हेला कोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास देन कैपिटल n तो ऑलरेडी जानि छो इट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी व्हिच इज समेशन f तापरे एठी c होची क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class preceding this is very important preceding the median class okay so problem solve करला बेल को याको हमें easily बुझी पारिबा okay so these are some of the properties or remarks which you can read by yourself we go straight to the merits or demerits भी देछि median रो okay you can read again by yourself okay जहाँ भी हो याको briefly मु कहि पारिबी एठी देखो merits कहूची it is rigidly defined then median is easy to understand and easy to calculate for a non mathematical person also and since it is a positional average so it is not affected by all the extreme observations okay tapre median can be computed while dealing with a distribution with open end classes open end class रे भी हम median बाहर करि परिबा median can sometimes be located by simple inspection and can also be computed graphically भी बाहर करि परिबा and median is the only average to be used while dealing with qualitative characteristics which cannot be measured quantitatively okay এটা সব তো মেরিট গলা তারপরে ডিমেরিট যদি দেখিবা in case of even number of observation for an ungrouped data median cannot be determined exactly तुमको एवरेज बाहर करिया पड़ुची तारपरे median being a positional average it is not based upon each and every item of the observation or distribution okay then median is not suitable for further mathematical investigations right then median is relatively less stable than the mean and particularly for small samples okay so let us now move to the problem section okay एटी problem रे कहूची जे in a batch of 15 students okay सेतिरु 5 जण फेल हे गले गोटे टेस्ट रे and the marks of the 10 students who passed were given in the problem now what is the median of all the 15 students okay then यार गोटे सेकंड पार्ट भी कहूची ए सेकंड पार्ट को हमें आसीबा फर्स्ट बे हमें प्रथम पार्ट टा देखिबा जो 10टा स्टूडेंट रो मार्क देला ताको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर रे हिसाब रे लिखि देला ओके अच्छा जो ता व्यतीत 5 जण स्टूडेंट फेल हिचंती ताले एठी तक लोएस्ट केते अछि 4 तो निहाती भाव रे एई फेल पिला 4 रु कम ही पाइथिबे मार्क ओके तेनु जदि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर रे लेखुछु
এই 15 ଜଣଙ୍କର ମାର୍କକୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ लोएस्ट मार्क है से फेल पिलाମାନଙ୍କର ओके मे बी 1 ही पारे 2 ही पारे 3 भी ही पारे 0 भी ही पारे ओके वी डोंट नो बट all these 5 failed students marks is less than 4 as per the question so हमें याको एही सारे लिखिले ताले 15 टा हेगला टोटल ऑब्जर्वेशन so मिडिल पॉइंट टा केते रे आसीबो ना 8th पोजीशन ओके सो एठी 8 पोजीशन हे जिवो तमरो median okay which is coming out to be 6 okay ताहले एबे सेकंड पार्ट देखो सेकंड पार्ट रे कहूची if the relation between two variables x and y is 2x plus 3y equal to 7 and the median of y is 2 find the median of x simply এই जो इक्वेशन देला एथिरु आमे x रो वैल्यू कैलकुलेट करिबा which is half times of 7 minus 3y okay so once x रो वैल्यू कैलकुलेट हला पोरे आमे जहा वैल्यू देथिला y रो मीडियन वैल्यू ताकू सिंपली पुट कर देबा we will get the median of x which is half काई कि एमते हला because since the change of origin and the scale in the observation does not result in any change in the order of or rank of observations okay then moving on to the next problem এটি ଗୋଟେ table ଦଉଛି tabular data which shows the age distribution of persons in a particular region okay age ଦେଇଦେଲା like below 10 below 20 below 30 okay ଏଇ ହିସାବରେ ଗଲା below 70 ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆସୁଛି 70 and over ଏଠି ଦେଖ number of persons ଦେଇଛି in thousand ଦେଖ ଏଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି କାହିଁକି because suppose ଜଣଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି 3 ओके 3 इयर्स ताले एटा बिलो 20 रे भी ठीक अछि बिलो 30 रे भी ठीक अछि बिलो 10 रे भी ठीक अछि इनफैक्ट बिलो 70 रे भी 3 इयर्स आसीबो तेणु से हिसाब रे एटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देछि बढी बढी जाइछि देखो ओके और लास्ट रे 70 एंड ओवर वी डोंट नो व्हाट इज दैट ओवर से क्वांटिटी हमको अनसर्टेन देछि किछि कथा नै जहा डाटा देला तापरे से पचारछि median age बाहर करो and why is the median a more suitable measure of central tendency than the mean in this case okay ये क्वेश्चन पचारछि तो आमे एई टेबुलर डाटा को आगो सजेई की लिखिबा देखो बिलो 10 बिलो 20 कहले तो हबनी आमे कोन करिबा एज को गोटे क्लास हिसाब रे लिखि देबा ओके इन इयर्स सो 0 to 10 10 to 20 20 to 30 then last रे एठी 60 to 70 and 70 and over ओके माने 70 रु जेते अधिका हे पारे ताले एठी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी एटा दे देछि आमे एबे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रु फ्रीक्वेंसी बाहर करि परिबा ताले देखो 2 रो सिंपली 2 आसिला तापर अछि केते 5 ताले 5 minus 2 हे जिवो व्हिच इज 3 ए हिसाब रे आमे माइनस करि करि जिबा एट द एंड it will be 0.1 okay ताले एबे आमे summation f बाहर करिबा ए सबु जाको फ्रीक्वेंसी को ऐड करिबा it will be again 15.6 जोटा एठी लास्ट ही थिला okay so this is the value of capital N ताले n by 2 केते हे गेला 7.8 तो एठी 7.8 to just exceed करू cf बा cumulative frequency एटा होची 9 okay so 9 here is just exceeding 7.8 ताले एटी corresponding class जदि देखिबो it will be 9 रो सीधा रे एटा हे जिवो 20 to 30 एई जो क्लास रो एबे देखो लोएस्ट जो वैल्यू स्मॉल l जदि बाहर करिवो ताले it will be 20 ओके यार लोएस्ट ओके सो एटी स्मॉल l जगह रे हमें 20 पुट कर देला तापरे एटी नेक्स्ट हमें जदि देखिबा हमरो h value okay h value magnitude 20 ru 30 अछि so h will be 10 okay आउ frequency होची small f equal to 4 okay आउ कोन रहिला c capital C मने पकाओ से जो स्टेटमेंट रे प्रीसीडिंग थिला सो प्रीसीडिंग जेतले कहूची 9 रु पूर्वटा जस्ट पूर्वटा which is 5 here so 5 एठी हमें पढिला okay so calculation है कि median age बाहरी गला 27 years now second part जदि पचारुची ताले in this case the median is more suitable measure of central tendency than the mean काहे कि because
the last class, that is 70 and over, is open end class, and in such a case we cannot calculate the arithmetic mean, but still then आमे median बाहर करि पारछु ए जो 70 and over माने because exact data देनी आमे एठी mean calculate करि परिबा नाही किंतु median calculate करि पारुछु. That is one benefit. Next problem, the frequency distribution of weight in grams of mangoes of a given variety is given below. Okay, ଆଉ mean बाहर करो median बाहर करो कहूची. So एठी weight दे देला, number of mangoes दे देला. Okay, ताले एबे याकू टेबुलर डाटा रे आमे रिप्रेजेंट करिबा. ओके देखो एठी गोटे जिंस मार्क करो, ए जो weight रो क्लास टा देइची 410 रु 419, सेकंड क्लास रे 420 रु 429. सो एठी 419 यार अपर टा और 420 यार लोअर टा एटा अलगा अलगा आछी. हमकू एटा को सजाड़ीबा को पड़िबो. ओके, केमती सजाड़ीबा आमे 0.5 नै जिबा. ओके, 409.5 रु 419.5. ओके, एटा गोटे आसिला 419.5 रु 429.5. देखो एठी यारो अपर यारो लोअर समान हे गला. ई हिसाब रे प्रथमे सजेबा को पड़िबो. ओके, तापरे आमे नंबर ऑफ मैंगो जोटा होची फ्रीक्वेंसी ताकू लिखि देला. देन मिड वैल्यू ए सबु जेते क्लास रो मिड वैल्यू व्हिच इज x ताकू बाहर कला बिकॉज़ मीन बाहर करिबार अछि. तापरे स्मॉल d इजीली बाहर करि परिबा. देन fd. ओके, तापरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, ऑलरेडी यारो कैलकुलेशन तमे जानिचो. ताले मीन एबे आमे बाहर करि परिबा बाय यूजिंग आवर फार्मूला दिस वन. ओके, व्हिच इज फाउंड आउट टू बी 443.4 grams. तापरे हमरा आसला मीडियन कैलकुलेशन. सो एठी n by 2 आसुची. देखो समेशन n हेउची केते एठी 200. सो n by 2 हैला 100. सो 100 रु जस्ट ग्रेटर होची एठी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रे 130. ओके, यार रेस्पेक्टिव क्लास जदि देखिबो इट इज 439.5 रु 449.5. एटा होची मीडियन क्लास. यार लोएस्ट वैल्यू होला 439.5 which is small l. तापरे यार फ्रीक्वेंसी होची जदि आमे देखिबा यार सीधारे होची केते 0. ओके सॉरी, हाँ 0 एठी आछी d रो वैल्यू आ fd रो वैल्यू. सॉरी एठी फ्रीक्वेंसी रो यार वैल्यू आछी 54. ओके, तापरे एठी आमे नेक्स्ट देखिबा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग माने 130 रु जस्ट ऊपरटा. सो इट इज 76. ए सब वैल्यू को पुट करिकी आमे पाई गला 443.94 grams which is the median value. Next problem, find the missing frequency. ओके, ए वाला प्रॉब्लम आसे. सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी बाहर करो हमको गोटे प्रॉब्लम दे दिथिबो. ओके, सो एठी देखो गोटे डेली सेल सोप रो एठी हमको कहूची जे ऑलरेडी मीडियन यारो दे दीची इन द गिवन प्रॉब्लम रुपीज 2400. ताले सेल होची इन 100 0 to 10 10 to 20 up to 40 to 50 number of shops. Okay, 5 25 this one is missing, we need to calculate 18 7, right? So suppose याको कहला हमें small a ए जो missing टा. ताले एबे आमे टेबुलर डाटा रे हिसाब रे को लिखि दबा. फ्रीक्वेंसी को लिखि दबा व्हिच इज द नंबर ऑफ शॉप्स देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, ताले हमरो समेशन f बा कैपिटल n आसीबो 55 प्लस a. ओके, ताले याकू एबे हमें पुट करिबा हमरो मीडियन रो फार्मूला रे. ओके, एई फार्मूला रे पुट करला परे एबे देखो हमरो 2400 जदि मीडियन ताले याकू हमें जदि रिप्रेजेंट करिबा इन टर्म्स ऑफ 100. ओके, इन टर्म्स ऑफ 100 जदि कहिबा ताले इट विल बी 24 जोटा कि 20 रु 30 भितरे आसुची. ओके, सो दिस इज द मीडियन क्लास. ताले स्मॉल l हे गला 20. ओके, h ही जाउची एठी 10. ओके, बिकॉज़ दिस इज द मैग्नीट्यूड. देन योर नेक्स्ट वन इज the cumulative frequency just preceding माने 30 plus a ru पूर्वटा that is equal to 30 which is the value of c, right? तापरे n by 2 n एठी पाउछु हमें 55 plus a divided by 2. एते की पुट करिकी यदि सॉल्व करिवो a रो वैल्यू आसी जिवो 25. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम,
In the frequency distribution of 100 families given below, the number of families corresponding to expenditure groups 20 to 40 and 60 to 80 are missing. Again, good missing data. एठी देला एबे दुईटा missing data actually. However, median हमको दे दीची 50. Find these missing frequencies. Okay, expenditure दउची, number of families दउची, ताले याको आमे आमर टेबल हिसाब रे आगो लेखिबा. Okay, आउ cumulative frequency बाहर करिबा. Suppose ये दुई missing data को आमे कहला गोटे हला f1 गोटे हला f2. ताले n equal to हमको already question कहूची जे 100 families अछि, so it is 100 which is 56 plus f1 plus f2. तापर cumulative रे आमे पाउछु finally summation जदि आमे करी करी जिबा ताले 56 plus f1 plus f2 रे पहुंचिबा again. तापर एठी आमे कोन करिबा from the adjoining table we have here f1 plus f2 केते हेबो एई जो एतिकी रु पाइबा आमे f1 plus f2 equal to 100 minus 56 that is 44. ताले here the median is given to be equal to 50. 50 टा को भितरे रहउची ना 40 रु 60 भितरे रहउची, सो एटा आसीगला तमरो median class. ओके, सेही भलिया पूर्वरु जो हिसाब रे हमरो कैलकुलेशन करथला, again you put the values. ओके, एटा आछि median रो फार्मूला. ताले याकू एबे सॉल्व जदि करी करी जीवो, then you will get up to this 50 minus 40 equal to 20 by 27 into 36 minus f1. Okay, so आकू सॉल्व कले यारो देखो f1 आउ f2 भितरु हमरो एक्चुअली f1 ही केवल एठी आछि. ओके, f2 आसीनी, राइट. सो इजीली हमें f1 वैल्यू वंस कैलकुलेट कर देला पोरे ताकू पुट करबा जदि f2 रो वैल्यू हमें इजीली पाई जिबा. f1 will be 23, f2 will be 21, right. Now moving on to the next problem. A number of particular articles has been classified according to their weights. After drying for 2 weeks, the same articles have again been weighted and similarly classified. Now it is known that the median weight in the first weighing was 20.83, okay, while on the second weighing it was 17.35. Okay, so some frequencies A and B in the first weighing and X and Y in the second are missing. So it is known that A equal to 1 by 3x and B equal to 1 by 2y. ताले ए मिसिंग फ्रीक्वेंसी गुडा को बाहर करो. ओके, ये भलिया गोटे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दे देला. सो हमरो फर्स्ट काम होला एठी क्लास जोटा क्वेश्चन ही दउची ताको हमें देखिबा. क्लास होची तीनटा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15. देन फ्रीक्वेंसी गोटे हला फर्स्ट वेइंग गोटे हला सेकंड वेइंग फ्रीक्वेंसी दे देला, राइट. देन क्लास एक्चुअली आउरी अछि, सॉरी एठी आउरी अछि क्लास 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and the respective frequency, right. अच्छा, ताले एठी x equal to हमें पाउछु 3a आउ y equal to 2b from the question already. Suppose हमें capital N1 हेला total frequency in the first weighing, याकू यदि ऐड करिवो तो मैं सब frequency को पाइबो 160 plus a plus b. Capital N2 similarly second weighing पाई total frequency which will be 148 plus x plus y. अब x और y रो वैल्यू in terms of a b पुट कर देले एतिकी आसीबो 148 plus 3y plus 2b. Okay, this is the required table which you need to draw. Okay, ताले एठी क्लास हमरो हैला frequency हैला, then cumulative frequency एटा first weighing रो, similarly frequency and the cumulative frequency second weighing रो. ताले since median weight in the first weighing is given to be 20.83. Okay, so 20.83 again a median class रे आछी. ताले फर्स्ट वेइंग पय ए हिसाब रे हमरो कैलकुलेशन चलिबो. तापरे सेकंड वेइंग रो हमकु यदि हमें देखिबा median class टा हबो 15 to 20. Okay, 15 to 20 this one,
ओके याकू भी अगेन आम हिसाब से कैलकुलेशन करवा ओके ऑलरेडी तुम कैलकुलेशन केमती कर अच्छी जानीगल सो इजिली एम ए बी आउ एक्स वाई रैल्यू पाई राइट तापर नेक्स्ट हूँ गोटे पार्टीशन वैल्यूज देख पार्टीशन वैल्यूज कहले आम ये प्रथम देखी मेडियन पाइबापी आम दुईटा इक्वल पार्ट्स रे डिवाइड करथिला जो हमर ऑब्जर्वेशन थिला किंतु आम दुई रु बेसी पार्ट रे भी आम डिवाइड करि परिबा ओके सपोज चारि भाग रे आम डिवाइड कला देन इट विल बी कॉल्ड एज क्वार्टाइल्स ऑलरेडी जानि जो क्वार्टर मीन्स 1/4 सो जदि गोटे डाटा अछि ओके दुई भाग रे भाग करथिलो हैला एठी गोटे पार्ट एठी आ गोटे पार्ट किंतु तमे जदि टोटल चारि भाग रे डिवाइड करिवो याकू देन वी विल गेट हियर लाइक दिस एठी तमरो चारिटा भाग पई तीनटा पॉइंट आसीबो व्हिच इज q1 q2 q3 ओके याकू आमे कहबा क्वार्टाइल एठी q2 will be same as your median और q1 हला लोअर क्वार्टाइल बा फर्स्ट क्वार्टाइल और q3 हला अपर क्वार्टाइल बा थर्ड क्वार्टाइल okay lower quartile माने it is the value which has 25% of the items of the distribution similarly third quartile has 75% of the observation below it okay and consequently 25% observation above it right ताले वर्किंग प्रिंसिपल मध्य सेही भलिया ही हबो मीडियन कैलकुलेशन पई जो फार्मूला पडुतला क्वार्टाइल कैलकुलेशन पई सेही फार्मूला हबो केवल एठी डिफरेंस हबो मीडियन रे n/2 होतला देखो फर्स्ट क्वार्टाइल पई n/4 हबो ओके बिकॉज़ एटा 1/4th पोजीशन रे अछि आउ यदि तमे थर्ड क्वार्टाइल करूछो देन इट विल बी 3n/4 दिस वैल्यू बाकी सब सेम फॉर्मेट रे ही रहइबो राइट तापर नेक्स्ट होउची डेकाइल्स मीन डेका मीन्स तमे जानिछो 10 ओके सो 10 पार्ट्स रे हमें याकू ए ऑब्जर्वेशन को एक्चुअली डिवाइड करबा को पड़िबो वी विल गेट एक्चुअली 9 डेकाइल्स d1 to d9 okay such that d1 is less than equal to d2 less than equal to up to d9 okay ताले ये डेकाइल कैलकुलेशन केमती करबा सपोज हमें ith डेकाइल बाहर करछु ताले सेम फार्मूला ऑफ द मीडियन एबे चेंज हे गला एठी ये जो n/2 होतला एटा हे जिवो I into n/10 ओके आई रो वैल्यू 1 to 9 पर्यंत रेंज करिवो देन नेक्स्ट होची परसेंटाइल ओके देखो क्वार्टाइल स्टार्ट होची फ्रॉम द लेटर q सो तारो सिंबल देबा हमें q डेकाइल पई सिंबल हला d आ परसेंटाइल जेतु p सो यारो सिंबल हला p देखो एठी हमें परसेंटाइल माने 100 पार्ट्स रे डिवाइड करिबा ऑब्जर्वेशन को दैट मींस we will have 99 numbers of percentiles that is p1 p2 up to p99 okay again p1 less than equal to p2 less than equal to up to your p99 same type of formula ebe I into n by 100 हेबो okay so in particular जदि हमें देखिबा p25 equal to q1 p50 equal to d5 which is equal to q2 एटा होची हमर मीडियन टा p75 equal to q3 d1 equal to p10 d2 equal to p20 d3 equal to p30 and so on in fact d9 equal to p90 okay so हिसाब रे हमें देखिला पार्टीशन केमती हमें करि परिबा गुटे ग्रुप डाटा को okay तापरे the graphical method of locating the partition values okay so various partition values like ame dekila jemti quartile hela decile hela percentile hela can be easily located graphically with the help of a curve which is called as cumulative frequency curve or याको हमें simply shortcut रे o give बोली कहबा okay so यार procedure को देखिबा in the following steps दुईटा अछि गोटे हला less than o give okay less than o give माने step जिबा जदी you represent the given distribution in form of a less than cumulative frequency distribution and then take the values of the variable in case of frequency distribution and the class interval
in case of your continuous frequency distribution along the horizontal scale जोटा होची कि x axis और cumulative frequency जोटा along the y axis तापरे हमें cumulative frequency को plot करिबा against the corresponding value of the variable. Okay, and in case of frequency distribution again the upper limit of the corresponding class in the case of continuous distribution. Okay, then smooth curve will be obtained. तमे गोटे smooth curve पाइबो केमती by joining the points which are obtained by means of free hand drawing and याको आमे कहबा less than cumulative frequency curve बा less than O give, right? ताले एबे second होची कोन more than O give. Okay, एई जगह रे आमे कहबा more than O give केमती आसीबो because we will have the form of more than cumulative frequency distribution and plot it against the corresponding value of the variable or against the lower limit of the corresponding class. Okay, in case of your continuous distribution, and this curve obtained on joining the points to obtain by smooth freehand drawing जेमते हमें यार previous टा भी देखिला, and it will be called the more than cumulative frequency curve or simply more than O give. ओके या विषय रे प्रॉब्लम या को बेस करी कि हम आकु देखिबा. नेक्स्ट हैला गोटे एग्जांपल देखिबा. हियर गोटे डाटा देला which is giving the distribution of marks of 100 students and calculate the most suitable average giving the region for your choice and also obtain the values of the quartile. Okay, 6th quartile, 70th percentile. Okay, how it is ये डाटा को आमे बाहर करिया को चेष्टा करिबा. क्वेश्चन कहू छी जे मार्क दे देला लेस देन 10, लेस देन 20, 30, 40 सिमिलरली लेस देन 80 जाय अछि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे देला. ताको आमे कोन करिबा ए टेबल रे आगो रिप्रेजेंट करिबा. लेस देन 10 माने 0 टू 10. ओके, तापरे लेस देन 20 कहू छी सो याको आमे 10 टू 19 कहि परिबा. ओके, तापरे नेक्स्ट हला लेस देन 30 सो 20 to 29 कहि परिबा. ओके, आ प्रॉब्लम रे जहां हमको देछि that is nothing but in the increasing order, so this is the cumulative frequency, this one, right? एटा cumulative frequency हमको देला. किंतु देखो एठी क्लास बाउंड्री जदी देखिबा अगेन एई 10 आउट 10. ओके, जदी हम मिसिला बढिया लागु छी किंतु नेक्स्ट बाउंड्री देखो एठी 19 रहउची किंतु एठी 20 रहउची. समान आसुनी, हमको समान करिवा को पड़िबो. दैट मीन्स ए लेस देन 10 नोट लेखिकी हमें बिलो 9.5 लेखिबा. ओके, 0.5 रो हमें एफे या सहित चेंज करिबा. सो 9.5 टू 19.5 हला सेकंड क्लास, तापरे 19.5 to 29.5 and so on up to 69.5 to 79.5. एबे देखो यार अपर वैल्यू लोअर वैल्यू ए हिसाब से समान आछी, राइट? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रो हमें इजीली फ्रीक्वेंसी तो बाहर करि परिबा, एटा तो जानि छ ऑलरेडी. एतिकी बाहर कर सारला पोरे हमें एबे क्वेश्चन जहाँ जहाँ हमको पचाउची बाहर करिबा. फर्स्ट बाहर करिबा मीडियन. मीडियन माने एटा होची सेकंड क्वार्टाइल बा याको हमें आल्सो कहि परिबा D5 बा P50. ओके, सो हियर n/2 हमर आसीगला ऑलरेडी जानि छ. मीडियन रो फार्मूला पडिला, फाइनली देखिबो आसीबो 45.93. देन क्वार्टाइल पहुंच रहउची. सो फर्स्ट क्वार्टाइल पई हमें n/4 ही नबा. मीडियन रो जहां फार्मूला थिला ताको हमें यूज करिबा केवल एठी n/4 that is equal to 25 पुट करिबा. ओके, सो its value will be 33.67. ओके, किंतु ए क्वार्टाइल रो क्लास टा अलगा हबो, मीडियन रो क्लास टा अलगा हबो. देखो ए जो क्वार्टाइल n/4 बिकॉज़ 25 आछि आउ तुम्हारा थर्ड क्वार्टाइल पे आछि 75. सो जस्ट ग्रेटर देन n/4 इज 32. 32 आछि 29 टू 39.5 ए क्लास रे. किंतु 3n/4 which is 70 जस्ट ग्रेटर होची 80 जोटा कि 49.5 टू 59.5 ए क्लास रे आछि. अकॉर्डिंगली स्मॉल l वैल्यू चेंज हबो, फ्रीक्वेंसी भी रेस्पेक्टिव क्लास अनुसारे चेंज हबो. तापरे नेक्स्ट पचारुची 6th क्वार्टाइल, सॉरी 6th डेकाइल. ताले एठी 6n/10 हबो. 6 पकोची माने एठी i इक्वल टू 6 पकेबो जो फार्मूला हमें ऊपर देखिथिला. डेकाइल इजीली कैलकुलेट हे जिवो. आउ बाकी रहला 70th
परसेंटाइल एठी I इक्वल टू 70 पकेइबो P70 बाहर करि हबो इजिली व्हिच इज बिली एठी 54.5 आसीबो ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखो ए स्टेटमेंट कोन कहूची द मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज n by 2 lower quartile is n by 4 upper quartile hela 3n by 4 and here n denotes the total frequency okay the statement is actually wrong okay kahi ki wrong because median ta ei distribution ro n by 2 nuhe okay n by 2 को जानिबो तापरे सेई n by 2 रो सीधार तमरो median class को जिवो सेई class भितरे अछि median value टा okay so median of a distribution is not n by 2 but it is the value of the variable जोटा होची x which divides the distribution into two equal parts so median is the value of the variable x रो गुटे ही value होची median such that n by 2 which is 50% of the observation are less than it and n by 2 observation are exceeding from it similarly lower quartile pai madhya sei bhaliya katha q1 which is not n by 4 because eta bhago karuchi 25% tomoro ethi observation less than q1 rahibo ଆଉ 75% more than q1 rahibo ଆଉ similarly the third quartile also which is 3n by 4 nuhe eta okay so here also 75% data will be less and 25% will be more than q3 okay तापर next problem एठी मार्क देला स्टूडेंट मानकर ओके मार्क देला 10 marks or less 20 marks or less similarly up to 60 marks or less number of students दे देला देखो बड़ी बड़ी जाईची so this is the cumulative frequency ताले हमें याकू एई डाटा रे कोन पचारची हमको ड्रॉ और लेस देन ओ गिव एबे देखो ई ग्राफ हमको ड्रॉ करियो पई कहूची ग्राफ पेपर रे ओके हियर द रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मिडिल 80% of the students ताकू बाहर करो आउ मीडियन बाहर करो also verify your results by the direct formula calculation okay ग्राफ भी बाहर करो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिकि भी बाहर करो फर्स्ट हला तो हमें टेबल करिबा टेबल रे मार्क दे देछि आउ तमरो cumulative frequency which is like this so summation n is 50 सेतिरु पाइला तमे frequency एबे हमें n by 2 पाइगला ओके सो एई फ्रिक्वेंसी रे हमरा कोन आसीबो एठी मीडियन आसीबो किंतु हमें कोन करिवार अछि एठी क्वेश्चन कहूची ग्राफ तैयारी करो ठीक अछि at this frequency n by 2 which is equal to 25 now along the y axis हमें एठी देखो फिगर देखि पारो along the y axis draw a line parallel to x axis देखो 25 होची एई जगह रे ओके सो एठी x axis सहित parallel करिकि हमें गोटे लाइन तैयारी कला राइट दिस वन दिस लाइन जोटा कि p पॉइंट रे टच कला ओके तापरे पॉइंट p रु हमें तळकु एबे y सहित parallel करिकि pm परपेंडिकुलर ड्रॉ करिबा टू x axis देन एठी तमे जदि चेक करिवो om रो वैल्यू ए जिवो 27.5 which is the median marks right तापरे range of the marks obtained by the middle 80% of the student middle 80% माने कोन 10% lower को काटी देबा 10% upper को काटी देबा ओके सो p90 रो p10 एति की भितरे मार्क को पचारची सो p90 p10 ग्राफिकली हम यदि बाहर करिबा ताले गोटे हेबो 90n by 100 which is 45 रो मध्ये सेई बडा लाइन गला एठी आउ परपेंडिकुलर आसी गला तापरे नेक्स्ट होची p10 माने 10 into n by 100 which is 5 रो एमती गला आउ लाइन आसीला ओके ताले एबे ए डिफरेंस टा हम यदि चेक करिबा कैलकुलेट करिबा ताले 47 रो 11.7 पाका पाकी ए डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करिबार अछि which is 35.3 एटा ग्राफिकली पाइला डायरेक्ट मेथड यदि कैलकुलेट करिवो ताले ए मीडियन आ p10 रो p90 डिफरेंस टा तमे यदि चेक करिवो मीडियन विल बी 27.5 ओके 27.5 आ ऊपर केते आइस्तिला देखो मीडियन टा यार जो वैल्यू टा अगेन 27.5 समान ही आछि आ
एठी जो गैपटा ग्राफिकली 35.3 आसला एठी डायरेक्ट मेथड तुम यदि कैलकुलेट करिवो 35.47 व्हिच इज क्वाइट नियरली इक्वल राइट तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉलोइंग इज द distribution of marks in law obtained by 50 students okay so marks दे देला more than देछि more than 0 more than 10 more than 20 more than 30 40 50 then the number of students एबे देखो decreasing करी करी जीवो because more than देछि less than देइनी ताले calculate करो median marks तापरे एठी कहूछि जे if the 60% of the students pass this test then find the minimum marks obtained by a pass candidate okay जहाँ मार्क दीची ताको हमें क्लास हिसाब रे लिखिबा 0 to 10 10 to 20 then last आछी 40 to 50 and 50 and above okay because we don't know more than 50 माने केते okay तापरे एठी CF वैल्यू देइची कि हां देइची को हिसाब रे देइची देखो এটা ইনক্রিজিং নুহ এটা ডিক্রিজিং ओके এটা ডিক্রিজ ହେଇ ଯାଇଛି ମାନେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଶୂନରୁ ବେଶୀ ହଉଛି କେତେ 50 ओके ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ପିଲା 56 ନମ୍ବର ବି ପାଇଛି ତାହେଲେ ବି ଏଟା ଶୂନରୁ ବେଶୀ ହେବ ଜଣେ ପିଲା ଯଦି 36 ପାଇଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଶୂନରୁ ବେଶୀ ହେବ ଜଣେ ପିଲା 1 ଯଦି ବି ପାଇଛି ତାହେଲେ ବି ଶୂନରୁ ବେଶୀ ହେବ ସୋ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି 50 ଆସାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ନମ୍ବର ଅଫ स्टूडेंट्स को देखो एठी हमें फ्रीक्वेंसी आमर कैलकुलेट करबार अछि लेस देन सीएफ बिकॉज डेफिनेशन हमको कोन कहूची लेस देन सीएफ बाहर करो हमको एटा मोर देन देची हमको याको सजाड़ीबा को पड़िबो एक्चुअली सो फ्रीक्वेंसी हमें केमती बाहर करबा प्रथम देची 50 ओके तापरे एठी हमें देखो हियर 50 is the value of summation f obviously এটা হচ্ছে capital N now incidentally this is the same distribution and obtained in the previous example जोटा हमें solve करथिला hence median marks टा एठी 27.5 आसीबो जोटा कि previous example रे हमें पाइथिला right ताले हमें एबे कैलकुलेट एठू केमती करिबा से जिंसटा हमको देखिबार अछि तो देखो 50 रू नेक्स्ट लोअर फ्रीक्वेंसी हला 46 ओके सो 50 माइनस 46 जदि आमे कर दउछु ताले एई मार्क टा पाउचंती केते 0 रू 10 भीतर पई एटा फ्रीक्वेंसी दैट इज 4 ओके सिमिलरली 46 माइनस 50 कर दबा जदि एई दुई भीतर डिफरेंस व्हिच इज इक्वल टू 6 एटा 10 टू 20 भीतर राइट तापरे सिमिलरली आमे जदि चलला ताले लास्ट हेबो देखो 10 रू 3 को माइनस कर देले आमे 7 पाई जाउछु जोटा 40 रू 50 भितरे ओके बाकी जोटा रहिबो केते रहिबो ए सब को जदि ऐड करिवो एतिकी जदि ऐड करिवो इट विल बी 47 ओके सो 50 रू 47 काटी देले 3 ही बळिबो जोटा कि 50 एंड अबव एठी हमें फ्रीक्वेंसी फास्ट बाहर करियो पड़िबो तापरे एई फ्रीक्वेंसी रो हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाहर करि परिबा जोटा लेस देन रे अछि ओके once एतिकी बाहर कर सारला परे now the calculation becomes very easy for the median so median by ए हिसाब रे हमें फॉर्मूला पुट करले similarly 27.5 as I have already discussed एतिकी आसीबो क्वेश्चन ता सहित पचारछि कोन गोटे एक्स्ट्रा जिंस जे 60% if 60% of the students pass this test find the minimum marks obtained by pass candidate so we want to find the value of x such that 40% of the students get marks less than x okay or in other words we have to find the value of p40 a percentile 40 रो मार्क पाई हमको बाहर करया को पड़िबो p40 so p40 रो हैला एटकी फार्मूला 40 माने i equal to 40 एठी लगेइबो पाइबो तमे यार वैल्यू 25 ओके सो नेक्स्ट प्रॉब्लम गोटे ग्रुप देला 5000 वर्कर्स ओके तांकर घंटा प्रति आय आवरली वेजेस जोटा वेरी करछि फ्रॉम 20 to 80 then wages of 4% of the workers are under 25 and those of 10% are under 30 15% are actually earning rupees 60 or over
then 5% are actually getting rupees 70 and over. Tapare quarterly wages are rupees 40 and 54, and the sixth decile de deuchi ethi rupees 50. Put this information in form of a frequency table. Okay, ताले केवल एठी टेबल रे पका बोली कहिछि आ किछि भी कहिनी जहाँ डाटा देछि आमे आगो लेखिबा देखो गुटे ग्रुप ऑफ 5000 वर्कर्स माने एटा हमको समेशन एफ दे देला व्हिच इज कैपिटल एन ताकू लेखिला तापरे जो जो क्वार्टाइल देछि बा डेकाइल देछि ताकू हमें लेखिबा Q1 हमको दे देछि व्हिच इज 40. ओके क्वार्टाइल वेजेस दे देछि देखो एठी 40 एंड 54 गुटे भी देछि. ओके सो 54 हो जाउछि केते Q3 राइट. सो Q1 Q3 दे देला ता सहित 6th डेकाइल देयर इज D6 भी देछि व्हिच इज 50 राइट 50. So this is nothing but 25%, that is 25 by 100 into 5000, 25% of n. Similarly D6 mane 60% of n, Q3 mane 75% of n. Okay, so these are the respective number of workers who are earning less than respective data, that is less than 40, less than 50, less than 54, right. So further हमको कौन देछि क्वेश्चन रे जहाँ जहाँ देछि ताकू पॉइंट वाइज लिखिबा 4%, that is 4 by 100 into 5000, that is 200 workers are earning under 25. 10%, that is 500 are earning under 30. 15%, that is 750 earning under 60, sorry under the no they are earning rupees 60 and over 60 and above. 5% they are 250 workers, they are earning over 70. Okay, एतिकी डाटा देला ताकू एबे हमें क्लास जदि रिप्रेजेंट करिबा ताले एठी हमरो क्लास देखो वेजेस को नेकी अंडर 25 गुटे आसला फर्स्ट. ओके बिकॉज अंडर 25 माने केते तळे आमे सेटा जानि पारुनु. सो अंडर 25 राइट. तापर नेक्स्ट होची 25 रु 30, 30 टू 40, 40 टू 50 जहाँ क्वेश्चन देछि 50 टू 54. देखो एठी क्लास रे एच जदि देखिबो एटा समान न हो. ओके मैग्नीट्यूड टा समान आसीबो नाही बिकॉज क्वेश्चन डाटा ही से बळी. सो 40 to 50, 50 to 54, 54 to 60, 60 to 70 and finally 70 and above. जहाँ हमारा number of workers ताकू पुट कर देला आउ cumulative frequency less than CF जोटा आसीबो 4250 जाए अछि 5000 minus 750 which is equal to 4250 right. तापरे एठी frequency distribution of the wages of the workers एटा हेगला आवरली वेजेस को हमें निगला जोटा होची 20 रु 30, 30 रु 40 एटा समान एसची राइट. तापरे नंबर ऑफ वर्कर्स जोटा फ्रीक्वेंसी एबे बाहर करबा जदी 200 प्लस 300 which is equal to 500 right. तापरे 750 आसीबो 1750, 1250, 500 and 250. okay so remember आगो हमें उपरे जहाँ डाटा थिला ताकू नहीं कि टेबल तैयारी कला तापरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जोटा कि समान एच को हमें एबे समान रखिला. ओके केमती ए जिंसटा हैला ए जिंसटा देखो एठी लिखिछि सिंस द नंबर ऑफ वर्कर्स विथ वेजेस अंडर 25 is 200 and further since it is given that wages vary from rupees 20 to 80. so the first class that is under 25 जोटा ए जगह रे थिला can be taken as 20 to 25 right, and the last class that is 70 and over can be taken as 70 to 80. এই জিনিসটা এটি লিখিছি রাইট কাইকি বিকজ দেখো মিনিমাম ভ্যালু দউছি 20 ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দউছি 80 দেই দিছি অলরেডি क्वेश्चन रे डाटा indirectly. so in the above table the various classes are not equal जेमती कहली. सो आमे एबे याको रीअरेंज करिकी कंबाइन करिकी आमे क्लास तैयारी करिबा हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड जोथरे की h रो वैल्यू हे जबो इक्वल टू 10 राइट. एंड फाइनली यार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आमे पाइबा फॉर 5000 वर्कर्स तांकर वेजेस को नेकी आवरली वेजेस को नेकी. so this is all about the
मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो थे कि आज आम मेडियन विषय पढ़िला। थैंक यू।